हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने ड्राइंग को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। सो आज मैं इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट कर दूँगा। अभी तक तो ड्राइंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप पूरा कंप्लीट होने के बाद और भी अच्छा लगेगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आर्ट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नेक को ड्रॉ करने के लिए भी मैंने सेम मेथड का अप्लाई किया है। सबसे पहले मैंने लाइटली सेट कर दिया, उसके बाद रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके लाइट टू डार्क शेडिंग किया है। जिस मेथड का यूज़ करके मैंने फेस को कलर किया है, उसी मेथड का यूज़ करके मैं नेक को भी कलर करूँगा। उसके बाद फिर जैकेट को भी उसी मेथड से करूँगा। सो इसके पिछले वाले 2 पार्ट में मैंने फेस को कंप्लीट किया था। सो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन में भी चेक कर सकते हो। तो बस यही कुछ था शेयर करने के लिए। और ये वाले वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक एक ड्राइंग को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ड्राइंग कैसा लगा।
तो अभी तक ड्राइंग कुछ इतना कंप्लीट हुआ है और सिर्फ नेक को बनाने में मुझे 1 से 2 घंटे का टाइम लग गया। और अगर बात करें पूरे ड्राइंग की तो मुझे 7 से 8 घंटे का टाइम लगा है अभी तक। देखते हैं पूरा ड्राइंग बनने में कितना टाइम लगता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। सो फाइनल रिजल्ट देख के ही जाना और कमेंट करके बताना कि आपको फाइनल रिजल्ट कैसा लगा। एंड आई होप कि आपको फाइनल ड्राइंग अच्छा ही लगे। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so सो ड्राइंग तो अभी तक कुछ इतना कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, ऑलमोस्ट 80 to 85% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस तो हमेशा देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अच्छा लगता है और एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाने का। सो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. और एक सजेशन चाहिए था आप लोगों से कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ऐसे लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है या फिर आप 5-5 मिनट के वीडियो देखना पसंद करते हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं उसके हिसाब से अपने चैनल पे वीडियो ला पाऊँ। सो फाइनली मेरा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है एंड इस ड्राइंग को कंप्लीट करने में मुझे 9 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लग गया और मुझे तो फाइनल रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।